ऑलराइट 104.8 इश्क एफएम पर मैं हूं आपके साथ रोहित वर्गीस एंड आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल इंसान है अनूव हाय वेलकम टू इश्क एफएम स्टूडियोज यार कैसे लग रहे I am very happy right now, very excited to do this. हैं या सो पहली बार आ रहे हो आप इश्क एफएम में नहीं पहले भी शायद आप पहले भी आ चुके हो ना या एक एक बार बार हाँ आप आ चुके हो हमने काफी अच्छी डिटेल में आई थिंक इट वाज मेहा हु वाज ट्राइंग टू yeah अंडरस्टैंड योर म्यूजिक एंड योर yes I think वाइब so तो यार यू कीप कॉलिंग योरसेल्फ आई एम अ बॉय विद अ गिटार आई एम जस्ट अ बॉय विद अ गिटार yes लेकिन आई थिंक यू आर मोर देन दैट यू आर नॉट जस्ट अ बॉय विद अ गिटार यू आर अ बॉय विद अ गिटार ऑफ कोर्स लेकिन with lot of followers, lot of people who like your music, lot of people who are waiting for your next music, and you are in a way a sensation. So you're not just a boy with a guitar. yeah I think it's just a thing that I say because जब परफॉर्म कर रहा होता हूँ स्टेज पे तो इट्स जस्ट easier to explain it to people कि why am I just a guy who's standing with a guitar with like no band Yeah. like there's nothing Yeah. so it's just easier to explain I think that's where it comes from and people have just like caught on to it and they love it so you know why Yeah. not Yeah. So ये कोई एक was it a एक लॉन्ग प्लान कि हाँ मैं सिर्फ अकूस्टिक गिटार के साथ ही अपना एक करियर बनाने की कोशिश करूंगा and I'm gonna lead this journey only with the guitar. Was this a conscious plan or it just happened? So now you're playing with the game. No, so it's something it just happened. Because the thing is that for me, my songwriting is the thing that should speak, right? And so obviously the vocals in the entire mix of things need to be higher so the songwriting comes through. And I think that's the reason why the music is very stripped down. And I think that's why the entire thing feels very acoustic and very acoustically inclined. So that's why I think it's just happened very naturally. There was no like conscious decision behind it or anything of that sort. कल को अगर मन कर गया तो काफी instruments भी डाल दूंगा. But अभी के लिए I think it's something that I want to do. Like this is how I want to work right now. एंड एक तरह से यार सेंसेशन बन चुके हो अभी मैं अनूप को ऑफ द माइक भी ये कह रहा था इनफैक्ट आई मेक यू मीट वन ऑफ माय कलीग एंड फ्रेंड हितेश हु इज एन एक्टर Yeah. एंड वो कह रहे थे कि अगर उनको कोई ऐसे इमोशनल सीन करना होता है या रोमांटिक सीन करना होता है तो जस्ट टू गो इनटू द कैरेक्टर वो वैनिटी में बारिशें चलाते हैं Love that. Love है ना that. तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ सच कॉम्प्लीमेंट्स तो कमेंट्स की अगर बात करें या कॉम्प्लीमेंट्स की बात करें फैंस का रिएक्शन की बात करें ऐसा कोई है जो तुम्हें एकदम याद है एकदम यार ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड आई सॉ दिस हैपनिंग So obviously there are a lot of very happy things that I have seen. Yeah. But expectations की बात नहीं है. But there are certain times when people tell me some very sad stories, and I am not inherently a very emotional person, but I do get like very emo, during these moments. Something happened a couple of days ago. I just did a show in Kolkata, and I've just come from there right now. So this one guy told me a very sad and very personal story, and I literally had to take like a minute before I met other people. Like I literally had to like drink some water, take a minute, just like wipe off like the little tears that I had because it was a very sad story. And just things like these make you realize कि यार घर पे बैठ के आप गाने बना रहे हो बट यू नेवर नो हाउ दे आर इम्पैक्टिंग पीपल एंड व्हेन यू एक्चुअली मीट देम यू रियलाइज कि यार दिस इज द एक्सटेंट ऑफ द इम्पैक्ट दैट यू माइट हैव ऑन समवन सो इट मेक्स यू फील वेरी रिस्पॉन्सिबल बट वेरी प्राउड एज वेल दैट ओ वी आर बीइंग एबल टू पुल ऑफ समथिंग लाइक दिस सो इट्स क्रेजी यू आर जस्ट अ बॉय विद अ गिटार यस ये आप तो कहते हो आपने इसके पीछे कहानी भी बता दी कि इट्स इजी टू टेल पीपल कि देखो ये बड़े से कॉन्सर्ट में सिर्फ मैं ही हूँ और मैं अपने गिटार के साथ ही हूँ यस लेकिन यार सच बताओ आप जब आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो यस यू स्टे विद योर फैमिली Yes. तो अभी भी जब घर में मेहमान आते हैं अभी आपको करोड़ों व्यूज मिल चुके हैं लाखों फैन फॉलोइंग है लेकिन क्या मेहमान आने पर आपको बोला जाता है अनु एक बार एक गाना सुना दो यार हाँ, of course, 110%. हॉल में Yeah, I'm still a normal Punjabi middle class boy, bro. There's nothing that's changed that way. तो जब मेहमान आते हैं तो अपना गाना गा के सुनाते हो या कवर Yeah, so the thing with me is that I have like some principles, okay? I have told everybody I don't do covers. Okay. वो घर में भी apply होता है. And I think now that a lot of people are listening to my music, I think when relatives do come over, like some of my cousins come over, like all of these things happen. I think they want to listen to my own music only. They don't ask for covers. They say अपना गाना सुना दे. That's something that's very nice, and I love it that इतना support मिलता है from my loved ones and my relatives as well. So I love it, yeah. तो मतलब जब अपने घर में परफॉर्म करते हो तो वैसे साउंड चेक वाला सीन नहीं होता ना मतलब जस्ट अकूस्टिक्स विदाउट Yeah. There is nothing. What I just sit in my lobby in my living room and I'm just like with the guitar and I'm just singing. That's how it कभी is. ऐसा हुआ है कि यार मन नहीं कर रहा मेहमान आ रखे हैं लेकिन घर वालों ने बोल दिया एक बार परफॉर्मेंस दे दो
Of course. तब क्या है भागने के लिए व्हाट इज योर बहाना? Nothing. I just have to do it. अच्छा, There are there is no there is escaping no this. escape. There is no escape. There are certain things that you just have to do in life. You can't help it. And I don't mind actually. I think as somebody, who sings, I should feel happy that I'm being given a chance to sing and people want to listen to me. So it's not really a problem, man. It's always chill. Okay. Well, talking about a problem, आज के टाइम में हमारे जनरेशन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्थापित हो चुका है एंड दैट प्रॉब्लम इज सिचुएशनशिप. एंड Yes. आपका ये जो लेटेस्ट गाना है हुस्न, इट इज अबाउट अ सिचुएशनशिप, राइट? Yes. That's what it's about. टेल अस, क्योंकि हमने होली पे गाने सुने, हमने ब्रेकअप पे गाने सुने, हमने लव पे गाने सुने, हमने हेट्रेड पे गाने सुने, एनवी पे गाने सुने, सिचुएशनशिप पे मैंने गाने नहीं सुने. तो ये आइडिया कहाँ से आया कि ओके सिचुएशनशिप एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में काफी चर्चे होते हैं, Yes. लेट्स मेक अ सॉन्ग ऑन दिस. सो वेयर डिड दिस क्रॉप फ्रॉम? So firstly, I'll just clarify. I don't think situationships are a problem. Okay, some people are okay with it, and that's completely cool. But this story is about somebody who got confused because of a situationship. That's just their perspective. So even in the song, so the song is basically called Husna, and this is my latest song. I just dropped it like a couple of days ago. It's very very recent, in fact, and it's about situationships, and it's about this particular story where there are two people who are together, but one of them is confused. Okay, are we together or not? Hai saath par hai saath na bhi. There's a line in the song, and this is a story about her, and this is a story in which she falls in love with her partner, but the partner doesn't see her that way, and he's not inherently bad or anything of that sort. Like that's not what the song is about. It's just that it's her confusion, and just her realizing that this is not for her. This is not meant for her. She doesn't love that way. She loves in a very old school, that pure way where she just wants to love traditionally just one person, and she wants to love that person for the rest of her life. And that's what the story is about. And I think we see this a lot. So many of our friends are confused, that, oh, I don't know, man. It's like feels very complicated. Are we together? Are we not together? Pata nahi. Oh, that person is with somebody else right now, but with me right now, like it's very confusing. So I really wanted to write something about that, and it's not something that I've just written as a take on society. It's a story about someone very close to me. So yeah. So obviously the story becomes very personal to me then. ऑलराइट, ओके. तो हुस्न आपका नया गाना है जो अभी रिसेंटली आया. लेकिन अब अनूप, थोड़ा सा हम लोग फ्यूचर की तरफ चलते हैं, ठीक है? हमने Yes. पास्ट के बारे में बात कर ली है, तो फ्यूचर में चलते हैं. मान के चलते हैं कि कुछ टाइम में आपको ग्रैमीज मिलता है, तो मैं अब ये आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ. Yeah. यू कैन टेक इट और यू कैन जस्ट से रोहित सच अ रैंडम थिंग टू से. सो मेरे हिसाब से ग्रैमीज में जब आपका जो विनिंग स्पीच होगा, तो उसमें आपको ऑब्वियसली यू हैव टू थैंक योर अपब्रिंगिंग, पेरेंट्स, घर, your maybe your school, maybe your friends, maybe your first person who guided you to the music industry, and कहीं ना कहीं पहले लॉकडाउन का भी आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा, है ना? Yeah. क्योंकि a lockdown played a big role Very in important your role. career. Yes. Yes. Tell us about that. 2019 या even if we 2020. 2020, हाँ, मतलब मैं ये कर रहा हूँ कि 2019 की अगर बात करें, एंड हाउ डिफरेंट वाज 2019 का दिसंबर एंड 2020 का दिसंबर, हाउ डिफरेंट वाज इट? Bro, zameen आसमान का फर्क, honestly. बताओ ना अच्छे से डिटेल में. So 2019, I was working in the family business, Okay. and unfortunately, things were not looking that great right now. Which I'm not going to get into the details of the entire thing, but it wasn't looking that great. But उस time पे I had a couple of songs out just as a hobby. हम सबको पसंद है. But I was still working, but weekends पे गाने बना के I was just putting some of them out, and the music had started doing very well. And it had started doing incredibly well, in fact. तो कैसे पता So चलता है? You had put it on YouTube? it was on YouTube, it was on Spotify, all of those things. तब तक Spotify India में भी आ गया था, and like things started like blowing up a little bit, and I could realize that the songs are doing pretty well. I mean, I was being able to generate a good income from my music as well, so I was being Okay, able to. this was already happening This before was the already pandemic. happening before the pandemic, yeah. So, but it wasn't obviously at the scale at which it is right now, but it was happening before as well. And I think that just kind of sort of made me realize that, okay, this is something that, I should be getting into, because both my parents, like my mom especially, really wanted me to get into music from a very early stage. Okay. But unfortunately, I couldn't get into it for a very long time. So it was something of a dream, like that the entire family shared. And this felt like the right time to just, like take that step. Okay. And even though I understand the pandemic was a very bad thing for like a lot of people, I know people who are very close to me, who have suffered a lot in the entire thing. But just looking at the positives, the lockdown, especially for me, was extremely good, because it gave me some time to just reflect on everything. And just before the lockdown, I luckily
shut shop. I shut the family business. I was like, okay, I don't want to be a part of this anymore, and I want to get into music. So it was right timing, right place, and I just got into the music, and the lockdown happened, and it gave me time to just build more songs and make more music because I didn't really have a lot, happening. And उस time पे a lot of people started going on social media, started discovering a lot of new music as well because सब घर में वेले बैठे थे, as we say, and कितना लूडो खेले हाँ भाई, कितना लूडो कितना खेलोगे लूडो कॉम्पो बनाएंगे. exactly. So they just wanted to explore more music, explore like media and all of those things, and I think that's why my social media blew up, my music blew up, and it just really helped me out that way. And at the same time, the songs that I put out during that time, because I was just sitting at home doing nothing creatively, like things were flowing finally, so I just made like very beautiful songs, luckily. And yeah, it just like things just changed, man. So December 2019, I was just working, trucks load करवा रहे थे, अपना manufacturing industry में काम कर रहे थे, and 2020 I was just getting ready to perform for Truckloads like of money. I mean, yeah, that comes with it, but it was just experiences that I would say that, truckloads of experiences Yeah. that I was just gearing up to get and all of those things. So it was amazing. क्रेजी यार, मतलब जिस तरह से आपने उसका फुल फायदा उठाया. सो व्हाट वाज दैट पॉइंट वेयर यू रियलाइज्ड ओके नाउ दिस इज क्लिकिंग. अब पैंडेमिक में ऐसा कौन सा पॉइंट था कि यार ये अब फट चुका है, अब नाउ नो लुकिंग बैक. यार ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं था. अच्छा, it was इट वॉज अ gradual. ग्रेजुअल थिंग. Okay. इट हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेजुअल थिंग फॉर मी. देयर इज नेवर बीन अ पॉइंट दैट आई कैन पिन पॉइंट यार दिस वाज द मोमेंट. Overnight success It was was नहीं. never overnight success. People might feel that way, but I have so many of my audiences, and I'm very lucky that I have an audience base that sticks around, and they've been around for a very long time, and they know it hasn't been that way. They've seen me getting like 10 views, 1,000 views to now millions, and that is how the growth has been. It's never been like an overnight thing. एंड जो इनिशियली आपके जो फॉलोअर्स फैंस जो इनिशियली आपके साथ जुड़े, Yeah. ऐसा होता है कि डू यू नो देम बाय नेम? So I am very bad with names, Acha. but I remember them, looking at their faces. So if they come for my shows and they see me perform live, and if I get a chance to meet them afterwards, I'm like, bro, I'm really sorry, naam nahi pata, but I know that you've been around. I know, and they're like, हाँ, we've been around for a very long. So ऐसे मेरे को मालूम है. एक मुझे कंटेंट क्रिएटर ने बोला था कि वी डोंट रिमेंबर देम बाय द नेम्स और फेसेस, बट हम लोग उनके Insta handle से पहचानते हैं. That is also very true. That actually happens. साक्षी क्रेजी फॉर यू. ओह, यू आर साक्षी क्रेजी फॉर यू. Yeah, that actually happens because even when like if they give me a letter, right, and उसके नीचे वो अपना नाम के नीचे हमेशा यूजर नेम जरूर डालते हैं so that you can find them, or if you want to have a conversation with them, and I'm like, bro, I know who you are, I have seen you, like I see you commenting on my thing. Yeah. So that kind of a relationship I do share with like the people who listen to my music. ऑलराइट. सो आपके ना गाने आपने अनूव मेंशन्ड इट वेरी कैजुअली, बट इट स्टेड इन माय हेड दैट यू सेड दैट यू आर नॉट अ वेरी इमोशनल पर्सन. Yeah. बट आपके गाने तो मतलब भर भर के इमोशंस ऐसा निकाल निकाल के फेंकते हैं. Yeah, so I'm not like an emotional person in the sense that I think with my head and I think very clearly. But when I'm sitting and I'm working on music, that's something that I'm not thinking with my head. That's like music is coming out of my heart. I'm literally sitting down and I'm just like pouring everything that I've felt. Okay. So an emotional person can also have like a lot of memories and a lot of moments, from their lives that they can pick up from. But it's not like, कि I'm an emotional person like 24/7. I think with like a lot of analytical, like viewpoint and everything, and I worked that way. But when it comes to my music, when I'm making my music, obviously all the emotions, I think that's when the entirety of the emotional baggage that I have like just like pours out, I guess. All right. And do you have someone in mind when you're doing really well, when your thing really blows? कि हमेशा या तो एक कभी कभार, जैसे विराट कोहली का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बोला था कि कभी कभार ना there is that one troll or that one person जिससे हमें दिक्कत होती है, so the next game you're playing for that one person. Yeah. यार 50 मारे ना, वो कहीं ना कहीं देख रहा होगा. Yeah. जब आपका एक गाना सक्सेसफुल होता है या when you start doing really well, do you have that one person or that person जिसके लिए आप करते हो? Does it go like यार आई थिंक मैं काफ़ी पॉजिटिव वे में करता हूँ इसको. सो आई वांट टू मेक माई मॉम प्राउड. दैट्स लाइक मोस्टली व्हाट आई एम लिविंग फॉर, एंड दैट्स लाइक आई वांट टू मेक माई सिस्टर प्राउड, एंड आई एम वेरी वेरी क्लोज टू बोथ ऑफ देम. दे आर लाइक माई, मतलब मेरी फैमिली तो वो है ही, बट दे आर द क्लोजेस्ट पीपल दैट आई हैव ऑन दिस प्लानट, राइट? सो आई फील दैट वेन एवर आई डू वेल, I just want to like know my mom's reaction, because I know that she will feel proud, and that just makes me very happy. Okay, yaar, as a son, I've done something to make my mom happy.
you know, she's had a difficult life. Yeah. You know, I don't know if like the listeners know this or not, but like I lost my dad pretty early on in my life. So no, it's okay, it's fine. Like we're all okay right now. But so my mom has had a very difficult life. So like whenever she sees me do well, it feels amazing. It feels like a win that, you know, okay, her son is being able to, you know, like give her that happiness that she was missing in her life or something like that. So I think that's what I do for. Yeah. But again, just say Virat Kohli, I didn't know about this, but I think it's pretty accurate. There are a lot of people who say like very negative things about it as well, which I never understand. Like, why would people do that as long as it's not constructive criticism? So you always have them at the back of the head also. But it's not like, oh yeah, this is, but it's just like I want to turn them into, you know, like people who love my music as well. Okay. कि if I can do, if I can turn the people who absolutely hate or despise my music, and I can turn them into people who say कि यार ये गाना फिर भी अच्छा निकल गया, that is something that makes me very happy, and which has happened with the recent song. अच्छा, Husna Yeah, के yeah, साथ हुआ yeah, ये? yeah. Sometimes I read my comments and all, okay, and I'm seeing कि bro, I never used to listen to his music, or I probably they did not like my previous music, because it's fine, like everybody has their own taste, but they're saying कि bro, but this song, and I'm like, yes, let's go, this is what I wanted, man. Everybody should love this one because I love it too. So yeah. तो सुन लें थोड़ा सा हुस्न, सुन Of course, let's go. लेट्स गो फॉर इट. Yeah. अगर यहाँ पर अनूप जैन ने ये बोला है कि इनका ये पर्टिकुलर जो गाना है, ये बहुत लोगों को अनूप जैन अगर पर्सनली पसंद नहीं, इट चेंज देयर ओपिनियन अबाउट अनूप जैन आफ्टर दिस सॉन्ग. सो लेट्स हियर दिस सॉन्ग. Let's go. Let's go for Husna. All right, 104.8 Ishq FM पर we've got Anuv Jain in the studios, and Anuv Jain का नया गाना है Husna. So tell us the story behind this song, कि आपने इसके lyrics कैसे लिखे, what was the idea behind it, and tell us a Okay. little about this song. So guys, this one is called Husna. This is my latest song. I just released it a couple of days ago, and the song is about situationships, and it's from a very personal story. I've written it for a friend, and yeah, man, it just talks about how, you know, like in situationships there are certain moments and there are certain times that between the two partners, one of them actually ends up falling in love and the other one doesn't. And this talks about the former's confusion and just trying to understand and navigate the entire situation. So that's what the idea is. Yeah, so let's go. Yes. So yeah, guys, this one is called Husna. These are the first few lines of the song. देखो देखो कैसी बातें यहाँ की है, साथ पर है साथ ना भी, क्या इतनी आसान है। देखो देखो जैसे मेरे इरादे वैसे कहाँ तेरे यहाँ थे, हाँ कितनी नादान मैं, मेरे हुस्न के अलावा कभी दिल भी मांग लो ना, है पल में मैं पिघल जाऊं। हाँ अब ऐसा ना करो कि दिल जुड़ ना पाए वापस, तेरी बातों से बिखर जाऊं। हाँ क्या बात है यार. I've got the best seat in the house for sure. Jealous हो जाओ. I've got the best seat. And 104.8 Ishq FM पर अभी मेरे साथ एक बहुत ही कमाल के इंसान तो है ही, अनूप जैन, लेकिन मैं एक और इंसान को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ. हितेश इज हियर विद मी. हितेश को बहुत आप सुनते हैं रात को दर्द दिल में. एंड हितेश को मैं क्यों लाया हूँ आज स्टूडियो में, और स्पेशली अनूप जैन से मिलवाने क्यों लाया हूँ, क्योंकि हितेश एक सीरीज में काम कर रहे थे वेयर ही वाज प्लेइंग द लीड. एंड हितेश ने मुझे ये बताया कि जब भी कोई रोमांटिक सीन होता है, जब भी कोई सैड सीन होता है, तो वो एक पर्टिकुलर गाना सुनते हैं. एंड ऑफ कोर्स पीपल नो अबाउट दिस सॉन्ग. आई एम टॉकिंग अबाउट बारिश है. सो हितेश, टेल मी अबाउट दिस. कितना इम्पैक्टफुल होता है ये वाला गाना, जैसे तू वैनिटी में ये वाला गाना चलाता है? यार मैं बता नहीं सकता. जब भी मेरा कोई इमोशनल सीन होता है या जब भी मेरा कोई रोमांटिक सीन होता है जिसमें मुझे किसी को प्रपोज करना होता है या मुझे अपने दिल की बात कहनी होती है, तो आवाज़ तो ठीक है, बॉडी लैंग्वेज भी ठीक है, लेकिन जब वो बारिशें में सुन लेता हूँ ना, उसके बाद तो मतलब ऐसा होता है कि फिर लड़की मना ही नहीं कर सकती. पर मेरे साथ होता ऐसा है कि शो में अक्सर ऐसा होता है शो में कि लड़कियां मना कर देती हैं, पर मुझे कोई उसका कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि बारिशें इतना खूबसूरत गाना. अनूप क्या कमाल का गाना आपने गाया है, और जिस तरह से वो गाना लिखा हुआ है
वो बहुत कमाल है, बहुत अमेजिंग है, और जितना मोटिवेशन है उस गाने में किसी लड़की को प्रपोज करने का ये एक अलग प्रकार का मोटिवेशन. डिड यू एवर एक्सपेक्ट लाइक इस तरह का भी मोटिवेशन हो सकता है आपके गाने से? Bro, I was 16 when I wrote that song, okay? So I had no expectation whatsoever. I just wanted to write something beautiful and write about my life and how I felt for this particular person. So अब अगर आप ऐसे बता रहे हैं मेरे को that it's helping you, you know, like it's giving you that emotional charge that you require to do certain scenes and all, it makes me very happy, man. I was I think talking like about- 16-year-old Anuv would be like really happy and like blown away that this is the kind of impact that this Yeah, song कि has on एक people. leading channel of India में एक leading actor is getting inspired by you. That's crazy, man. That's crazy. I Yeah. love that. I'm so happy that that song does that for you. कि वो गाना मुझे 3 साल पहले किसी ने इंट्रोड्यूस किया था, मेरी को एक्टर ने, कि ये गाना सुनो, और उसके बाद वो मेरी प्लेलिस्ट से कभी नहीं गया, और मैं ऐसे सॉन्ग्स इकट्ठे करते रहता हूँ जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिले कोई भी सीन करने से पहले. Yeah. एज एन एक्टर ये थोड़ा सा मेरे लिए बड़ा अमेजिंग सा होता है कि जब म्यूजिक के साथ आप कोई सीन परफॉर्म करते हो. तो बारिशें मैंने कई सारी अपनी पोइट्रीज में भी वो यूज़ किया है. मैं जब यहाँ पर अपना इश्क के ख्याल में जब लेकर जाता हूँ या मैं अपनी पोइट्री कब सुनाता हूँ, तो गाना जरूर मैं चाहता हूँ कि वो यूज हो, और वो बहुत अमेजिंग होता है. I मुझे love लगता है that. आज मुझे वो शूट करना चाहिए अनूप के साथ. गाना करना चाहिए. इनफैक्ट ये बता ना कि जब तू वर्कआउट करता तो कौन से गाने में तेरी ऐसी बॉडी बनानी है वो बताना मुझे. तब भी मैं बारिशें सुनता हूँ. ऐसा नहीं हो सकता यार. Nahi, I'll tell you what, even when I work out, for some reason I listen to slower music. It just What are you calms me. saying? Yeah, I don't know why. Work? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं. आप I listen to like piano based music and all of that, like very classical music as well. Like it really helps. I don't know why, but it just helps me out a lot. Okay. Yeah. ये होता है. हाँ. तो बारिशें सुन के आज वर्कआउट करने वाला है. After 3 weeks of missing my gym. बेंच प्रेस मारेगा और बारिशें सुन रहा होगा. You know वो सारे DSPs वगैरह पे वो उनकी playlists होती है ना. I think they should put the song in like that gym playlist also Yeah, now. Barishein. Because it is helping a lot of people. So यार Anuv, come on, now that we are here, Hitesh, one of your biggest fans is here. Yes. एक बार हो जाए यार बारिशें भी. Of course, है of ना? course. अब तो बनता है. I'll never say. आप ऐसे ही मांग लेते हैं, कोई problem नहीं थी. हितेश, go for it. Yes, मेरे फोन से भी रिकॉर्ड कर लो. अब ये वाला वर्जन सुनना हाँ, नेक्स्ट ये. टाइम से. You got a live version right in front of you. So देखो इश्क एफएम अगर आप सुन रहे हैं इस समय तो आप लकी हैं, क्योंकि अनुव जैन का ये जो गाना है बारिशें ऑब्वियसली काफी लोगों के दिलों में तो जगह बनाई है, लेकिन इस समय आपके रेडियो पर भी ये जगह बना रही है. एंड यू गॉट द लाइव वर्जन ऑफ इट जो हम लोग इस समय बेस्ट सीट्स इन द हाउस के साथ एंजॉय करेंगे. क्या बात है. लेट्स गो फॉर इट अनुव. Okay guys, so usually मैं हमेशा intro देता हूँ अपने गानों के लिए, but this one is बारिशें and I'm singing this because Hitesh loves this one. So yeah, let's go. Thank you. हौले से धीमे से मुझको बाहों में भर लो ना तुम, नरम सी सांसों में मुझको आहों में भर लो ना तुम. सुन जरा मेरे पास आ, अब बैठे हैं हम भी यहाँ दिल के दरमियाँ. बारिशें बारिशें हैं तेरी ही बातों पे मैंने सजा ली है दुनिया यहाँ दिल के दरमियाँ. बारिशें बारिशें. वो क्या बात है यार, क्या बात है. Yes. ऐसे मत देखो यार मेरे को. अब कोई तो होना चाहिए ना गाने को सुनने के बाद इसके साथ में एक्सप्रेस कर सकूं. Again, कमाल है यार. क्रेजी ना. यार He's ये तो amazing. He's just amazing. Yes. क्या मतलब आवाज और क्या इसके जो लिरिक्स हैं, और जिस तरह से इतनी सिंपलिसिटी के साथ अगर कोई गा दे, Exactly. ऐसा दिल है तो फिर दर्द तो होगा ही, ऐसा वाला जोन में आप चले जाते हैं. Thank you. सिंपल ये सॉन्ग लगता है उतना ये है नहीं. वही. इतने सारे इमोशंस हैं इस गाने में. 16 के थे आप जब आपने रिकॉर्ड किया, लेकिन मुझे आज भी ऐसा लगता है कि ये कहीं उस लेवल को टच करता है जो बहुत मेच्योरिटी का एक लेवल है. इमोशनली मैच्योर इंसान ने Completely. मतलब you ये are 16 में मैंने लिखा था but recorded much later. Okay.
So I recorded it when I was 21, but I wrote it when I was 16. Yeah, So, but that's amazing. but I think the story comes to the lyrics. So I was 16 when I wrote the song. Yeah. Because it's amazing because जब मैं अपने 3 महीने पुराने स्क्रिप्ट्स पढ़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है क्या लिख रहा था यार मैं 3 महीने पहले और आपने 5 साल बाद you were so that means your emotional maturity at the age of 16 is commendable. Yeah. At the age of 21 also you were able to relate to that. You were Yeah. able to resonate with Yeah. what you've written. Yeah. So that's amazing. एक सवाल मुझे भी लगता है मैं पूछ सकता हूँ यहाँ पे कि यार 16 में दिल टूट गया था या क्या हुआ था इस गाने की पीछे स्टोरी क्या है मैं वो जानना चाहता हूँ एक्चुअली लोगों को ये लगता है कि दिस इज़ अ सॉन्ग अबाउट हार्ट ब्रेक, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं. बट ऑब्वियसली आई वांट टू लीव इट टू हाउ पीपल वांट टू परसीव द सॉन्ग, बट इट्स एक्चुअली अ वेरी हैप्पी सॉन्ग फॉर मी ऑनेस्टली, कि इट्स अबाउट फॉलिंग इन लव विद समबडी एंड दैट्स द आइडिया बिहाइंड द सॉन्ग. तो जब मैं बोलता हूँ तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे निंदिया के रातें हैं, तो दैट्स एक्चुअली जस्ट मी टेलिंग दैट पर्सन दैट इफ़ यू वर नॉट देयर, इट्स नॉट दैट कि तुम नहीं हो, it's if you weren't there, then things wouldn't be the same and things wouldn't feel the same way. So that's what the song is about. It's about falling in love rather than falling out of love. So yeah. It's beautiful how Anuv has been dodging love. अभी इनका जो नया गाना है हुस्न, उन्होंने बड़े creatively कह दिया it's for a friend. It's like I'm asking for a friend, but No, we but- always know it's not for a friend. So is it? I'm just gonna not say anything about Yeah, that. I'm so just gonna are you like like- no is it comment, no like comment, no comment. So tell us, Ishq FM पर हो यार, ISHQ. No, so Barish is something that I just told you guys that it's something that I felt for somebody, but it is about falling in love, not falling out of love. So that's what the idea was. But Husna is actually for a friend. This is written for a friend, and from yeah. So we'll believe that. We'll believe that because it's a fantastic song. And Anuv, wish you all the best. And Yeah. thank you so much for coming. अगर आप इस समय देखिए हमारे लिसनर्स तो बहुत ज़्यादा खुश हैं. आपने 2 बढ़िया गाने लाइव परफॉर्म कर दिए. So right now I'm gonna give you a challenge. Yeah. And if you do well in that, Yeah. I'll let you go. Okay. But if you do not, if I win, Yeah. फिर आपको एक और गाना गाना पड़ेगा. ठीक है? So guys, I'm just gonna say I'm gonna do very badly because I would love to sing one more. Why not? Let's try. All right. So ये गेम है जिस गेम में बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं मुझे हराने के, लेकिन नहीं हरा पाते, इंक्लूडिंग हितेश ने भी ट्राई किया था. Okay. सवाल पे सवाल गेम का नाम है. बहुत आसान सा गेम है. इट्स अ गेम वेयर वी हैव टू हैव अ कन्वर्सेशन. ठीक है. बट दैट कन्वर्सेशन नीड्स टू हैपन ओनली इन क्वेश्चंस. Okay, cool. सिर्फ सवालों में हमें बात करनी है. ठीक है. लेकिन आप टॉपिक चेंज नहीं कर सकते. Oh, okay, ठीक है. वन कन्वर्सेशन बट ओनली इन क्वेश्चंस. Yeah. सो अनुज जैन, आर यू रेडी? Let's do this. Alright, अनुज जैन के साथ सवाल पे सवाल. तो अनुव, कल आप कलकत्ता गए थे, आज आप मुंबई आए हो, और कल कहाँ जा रहे हो? शायद मैं कल यहीं पर ही हूँ. ये तो जवाब हो गया ना. ये शायद बोला मैंने. तो क्या हुआ जवाब तो? अरे तो शायद इसको. Oh, see, I lost. Let's go. चल, let's do one second. ठीक है, टेक 2. हाँ, take two. Let's go. ये ट्राई बॉल की तरह था. अब ये एक्चुअल गेम स्टार्ट हो चुका है. और अनुव जैन And I can only interact with you. I can only interact with you. I could have asked Sanjana also कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. हाँ, क्यों नहीं पूछा? अच्छा, पूछ सकता हूँ. अच्छा, ठीक है. Okay. Done. Your statement needs to be a question. Okay, ठीक है. Got it. Alright, अनुव जैन को मैं एक और मौका दे रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ. तो अनुव, ये बताओ कि अभी तुम्हारा दिसंबर कितना बिजी होने वाला है? संजना, मेरा दिसंबर कितना बिजी होने वाला है. Easy. तुम्हें नहीं पता क्या? कब जवाब दोगे? दिसंबर के बाद. पहले तुम बताओ तुम्हारा दिसंबर कितना बिजी है. क्यों, मुझे अपने साथ टूर पे ले जाओगे क्या? तुम चलना चाहते हो टूर पे? तुम्हें देखकर नहीं लग रहा कि मैं विल्ला हूँ? This is a difficult. Is this a difficult game? Is this how difficult it is going to be? बहुत मुश्किल हो रहा है क्या? यार मैं काफी बेकार कर रहा हूँ ना इस गेम में. Let's go. हाँ, that was a good one. ये कहाँ से सोचा भाई? यार तुम बताओ, ऐसा कोई वाइब है क्या स्टूडियो में जो लोगों के दिमाग में ऐसी चीजें आ जाती है? क्या चीजें आ रही है तुम्हारे दिमाग में? तुम बताओ, तुम्हें देख के क्या लग रहा है मुझे? हैं? जवाब दे दिया, हार गया मुझे ऐसा लगता है. नहीं, मुझे देखकर तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए भाई? कैसे सवाल पूछ रहे हो? यार मुझे तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि
मेरे को तो बहुत चिल वाइब आ रही है, बट तुम शायद ज़्यादा कंपेटिटिव हो रहे हो मेरे साथ, क्या ये सच है? ये जो तुमने ये जो लंबा चिट्ठा एक पूरी कथा लिखने के बाद जो एंड में एक सवाल डाला है, ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी होने वाली है क्या अब आगे तुम वाले गेम में? रिलेटेड है, तुमने कभी एग्ज़ाम दिए हैं? किस चीज के? कभी वाइवा दिया है? वाइवा? वाइवा मतलब वो जो प्रैक्टिकल एग्जाम के पहले होता है वो है ना, जहाँ पर टीचर सवाल पूछते हैं हमें जवाब देना पड़ता है, वो वाला? हाँ वैसे ही, बट तुमने दिया है? कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, मतलब कहना क्या चाहते हो? तुम यार देखो, हार भी मान सकते हैं, गाना भी गा सकते हो। ठीक है, I'll just sing then, I'll just sing. लेकिन ऐसे This नहीं is है। good, this is good, but this ऐसे is नहीं, good, you yeah. have to accept in front of Mumbai Yeah. कि हाँ मैं अनूप जैन, मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं, करोड़ों व्यूज हैं, लेकिन आज मैं रोहित से सवाल के सवाल में हार गया। I'm a half, glass half full kind of guy. So मैं बोलने वाला हूँ कि मैंने रोहित को जीतने दिया. वाओ, वेल प्लेड। अब बढ़िया खेल रहे हो यार तुम। Bro, I'm good with words. I just wanted to edit that so that I could sing for people. Yeah, let's go for it. We believe that. Okay, so guys, this one is gonna be a bit different. चलेगा? बताओ यार। ठीक है. You know, काफ़ी बार ऐसा होता है that we have this like very special person in our lives, but हम कह नहीं पाते उनको, you know, that oh we are in love with you. And this is what this song is about. This one is very different from, you know, what I usually do, but I love it. So this one is called Antariksh. हाँ करता मैं बातें मेरी आईने से, देखो तेरी तुझसे कैसे खुल के वैसे बोलूँ मैं राज दिल के, अब तेरे सामने हूँ, कितना कुछ मैं कहना चाहूँ, मुझको ये बता दे फिर क्यों खोजूँ मैं अल्फाज मिलके, देखो ये आईना आए ना तो क्यों यहाँ आईने में साथ मेरे तेरी ही तो है जगह, भूल जाऊँ अल्फाजों में ही निकले ना आवाज़ों में कि पास मेरे पास में आजा आजा ना, अरे आ अरे आ अरे आ अरे आ अरे आ